Welcome to MicroMedEd Education. I'm Dr. Rachna Solanki, and today we'll discuss regarding mycology. What do you mean by mycology? It's logy means a study, and myco means fungus. So it is a study of the fungus, and we'll discuss in brief what are how we have to learn this mycology. So you have observed such thing on your bread or a pickle, a bottle of a pickle. Some green or blue or bluish green or white color structure that is happening over the bread or even sometimes black. So वो है क्या और इसको क्या बोलते हैं? यही फंगस है. And क्या हम उसे खाते हैं? No, we don't eat this and we throw. But एक दूसरी चीज़ है जैसे कि baker's yeast or dry yeast that is available in a bottle or a packet that we use for the preparation of pizza, breads. तो ऐसा क्यों है कि ब्रेड बनाने के लिए एक ईस्ट यूज़ करते हैं जो एक फंगस है, और जब ब्रेड पे फंगस ग्रो हो जाती है तो उसे हम नहीं खाते हैं. तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज this figure which shows fungus on the bread. They are pathogenic and we cannot consume it. However, the dry yeast that is prepared is under sterile conditions and that is edible and it's not pathogenic. So now you can understand the difference why it can be used and this cannot be used. So basically what are the characteristics of fungus? तो सबसे पहले cell wall is eukaryotic, composed of chitinase and mannan and not peptidoglycan, just like our bacteria. बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है, इसमें चाइटिन, ग्लूकन्स एंड मैनन है. सेल मेम्ब्रेन किसका बना है? आर्कोस्टेरल का, जिसके ऊपर कितनी सारी एंटीफंगल ड्रग्स विल एक्ट. It can be a saprophytic or parasitic in nutrition and reproduction by sexual or as well as asexual method. The preferred temperature is 25 degrees Celsius to 37 degrees Celsius and it prefers acidic pH for its growth. Now we discuss the classification of fungus. So basically either it can be an yeast or yeast-like the figure mentioned here, or mold like this pipe जैसे structures जो आपको देखा उसको mold बोलते हैं. It can be septate or aseptate. अगर बीच में आपको septas ऐसे पतले पतले दिख रहे हैं that is called septate hyphae. These are broad aseptate hyphae. Now septate hyphae is again divided into dimorphic, opportunistic and dermatophytes. So further enhancing with the pictures, so yeast, the example is Candida as well as Cryptococcus neoformans, which is a capsulated true yeast. However, Candida is yeast like fungi. So you can appreciate now this is a gram stain of our gram stain showing yeast that is Cryptococcus neoformans, and the another one is the black background is Indian preparation जो उसका कैप्सूल डेमोस्ट्रेट करता है, ये भी Cryptococcus neoformans की फीमेल है. Then in molds we have multicellular structure or hyphae, and the examples are Aspergillus, Rhizopus, Mucor and dimorphic. Dimorphic नाम ही बता देता है. Di means तो, morphic means two morphological forms. So it has two morphological forms. The one that is excess at 35 degrees Celsius is mold and 37 degrees yeast. The example are Histoplasma, Capsulatum, Blastomyces, Dermatitis, Coccidomyces, Emitis. Now you have to remember that the most frequently asked question for 2 marks in this are what are the dimorphic? Define dimorphic fungi with its examples. Then the classification by sexual reproduction. उसमें Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota and Deuteromycota or fungi infect. ये भी frequently asked question है, what do you mean by fungi imperfecti? The fungus जिसका sexual reproduction stage पता नहीं है and has an observed is called fungi imperfecti, and their examples are Candida, Trichosporon or Microsporon. So here asexual form is Conidia, here is Sporangiosperm, and here as per the phylum it is Zygospores, Ascospores, Basidiospores
And the examples are Rhizopus and Mucor in case of Zygomycota, Ascomycota, Aspergillus, Penicillium, Basidiomycota, Streptococcus, Neoformans. तो हमने यहाँ पे भी देखा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फंगाई इन्फर्टिलिटी, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और दूसरा अभी तक का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो था डिफाइन डायमॉर्फिक फंगाई एंड देयर एग्जाम्पल्स। अभी आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन हमने देखा एक स्पोर्स सेक्शुअल क्लासिफिकेशन, एक मॉर्फोलॉजिकल देखा साइट ऑफ इन्फेक्शन। आप सबने ये ऐड देखी होगी बीटेक्स लोशन, दांत का खुजली, so it is basically a fungal infection. So this fungal infection can affect any part of the body. It can be superficial, cutaneous, subcutaneous, systemic and opportunistic. तो superficial किस को Malassezia furfurus, pityriasis versicolor, stratum corneum और hair staph में कहता है। Dandruff is also considered as a fungal infection. Now in cutaneous it is the skin, hair, nails and dermatophyte like Trichosporum, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton. These are the fungus which infect this. Then comes subcutaneous. So it's skin or subcutaneous tissue and it is made by sporothic scanky. Deep internal organs, we already discussed this fungus like histoplasma, blastomyces, coccidioidomycosis. These are systemic fungus. And opportunistic fungus, which is, what do you mean by opportunistic? जब भी अपॉर्चुनिटी मिला उसको ग्रैब कर लिया और इन्फेक्शन किया। सो इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन वेयर द इम्यूनिटी इज लो बिकॉज ऑफ एनीथिंग लाइक मैलिग्नेंसी, ऑन कीमोथेरापी, ऑन स्टेरॉइड्स, रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, एनीथिंग। सो उसमें आते हैं कैंडिडा, एस्परजिलस, म्यूकर। ओके, सो यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन नियरली कंप्लीट हो रहा है। इसमें हम फिगर्स भी देख के थोड़ा देखते हैं क्या है। So here you can observe these are superficial fungal infections. Then keratinized tissue, these are dermatophyte infection of nails. Then skin subcutaneous sporadic scanky. This is candidiasis, opportunistic infections. Now the most important question and most frequently asked question is laboratory diagnosis of fungal infections. Basically in mycology you have to learn only 4 to 5 टॉपिक्स और उसमें से मिनिमम 12 to 15 मार्क्स आते हैं। सो आई जनरली रिकमेंड स्टूडेंट्स टू डू नॉट स्किप माइकोलॉजी बिकॉज थोड़ा सा पढ़ के अच्छा मार्क्स की गारंटी है। सो एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस। सो बिफोर प्रोसीडिंग इनटू लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन आई वांट टू डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग दिस लैबोरेटरी डायग्नोसिस। उसमें फिक्स हेडिंग होते हैं, किसी का भी पूछे, बैक्टीरिया का पूछे, पैरासाइट का पूछे, वायरस का पूछे, फंगस का पूछे, ये हेडिंग्स आने चाहिए, उसी के अंडर आपको लिखना है। सबसे पहले कोई भी लेबोरेटरी आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर सैंपल्स। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड विच सैंपल्स, हाउ टू टेक इट, हाउ टू ट्रांसपोर्ट इट, देयर मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, देयर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में क्या आएगा, आपके सारे स्मीयर्स कौन कौन सी कर सकते हो आप रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। फंगस के लिए क्या आएगी, बैक्टीरिया के लिए क्या है, वायरस के लिए क्या आएगी, पैरासाइट। देन कम्स कल्चर। बैक्टीरिया कल्टीवेट कर सकते, फंगस को कल्टीवेट कर सकते, वायरस को नॉर्मल मीडिया पे कल्टीवेट नहीं कर सकते, उसके लिए सेल लाइन चाहिए। पैरासाइट को भी कल्टीवेट नहीं करते, ओनली फ्यू एक्सेप्शंस आते हैं, उसमें 1-2 है जिसमें थोड़ा सा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। स्टूडेंट्स जनरली समटाइम्स forget and they can observe the virus under simple microscope or they cultivate in on मैकॉन्ग की जगह। तो ये फंडा क्लियर रखना है कि वायरस नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है, के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए और वायरस कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, हाउएवर फंगस कैन बी कल्टिवेटेड। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है हेडिंग के सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, एंटीजन, एंटीबॉडी, कौन सी टेक्निक से ले हो, certain biomarkers are there, then molecular based test, and if your fungus or bacteria like जो कल्टीवेट होते हैं तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसे देखी जाती है। सो दीज आर द ब्रॉड पॉइंट्स अंडर विच यू हैव टू राइट अ लेबोरेटरी डायग्नोसिस। चलो आप फंगस से स्टार्ट करें। सो एज डिस्कस, सबसे पहले स्पेसिमेन कौन कौन से लेंगे, तो क्लासिफिकेशन याद करो क्या था कि सुपरफिशियल होता है, क्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस, डीप, उसी हिसाब से सैंपल देखेंगे।
तो कौन सा है, स्किन स्क्रैपिंग आएगा, नील स्क्रैपिंग आएगा, हेयर आ सकता है। सबक्यूटेनियस में क्या आएगा, पस आएगा, बायोप्सी आएगा, टिश्यू आएगा, सिस्टमिक all body samples like sputum, bile, CSF, blood, urine, the tissue from that particular organ. Okay, now remember, whenever you want to do any culture, either it is bacterial or fungal, ठीक है, or even viral culture in cell line, you have to always collect a sample in a sterile container or before introduction of antimicrobial. भाई बैक्टीरियल कल्चर करना है तो एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है, फंगल कल्चर करना है तो एंटी फंगल, इन दोनों को देने से पहले ही ले लेना है सैंपल। क्यों? वरना इनहिबिटरी इफेक्ट्स आएगी, दे विल स्टार्ट किलिंग दैट पर्टिकुलर पैथोजन ऑफ इंटरेस्ट। स्टेराइल कंटेनर बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड टिश्यू जब भी लेते हैं दैट हैज टू बी टेक इन टू स्टेराइल कंटेनर विद अ स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, नेवर इन हिस्टोपैथ फॉर फॉर्मेलिन विच इज यूजफुल फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। Remember, whenever you are taking any tissue from the body, always use as many tests as you can, because these are precious samples. You cannot repeatedly take these samples again and again, so they become precious samples. Now macroscopic appearance में भी देखना है। In macroscopic appearance generally what happens, your tissue, if they have a fungal infection, there will be a blackening or blacking part of the, so that has the fungal elements. So always try to process your sample from that particular portion which is black in nature. अभी माइक्रोस्कोपिक उसमें सबसे पहले for KOH mount that is 10 to 20%, even 40% can be used. तो 10% KOH यूज करते हैं। बेसिकली KOH it dissolve the tissue cells, तो जब फंगस टिश्यू के अंदर होती है you cannot appreciate, but when the tissue cells are dissolved by KOH you can appreciate the fungal. So this is the figure which shows that there is a fungal element. अभी उसी KOH mount में if you add a calcofluor white which is a fluorescent dye, and you can appreciate a fungal element under the fluorescent microscope. Then third is our gram stain. Budding yeast cells with pseudo-hyphae can be appreciated. As discussed earlier, these are the Cryptococcus neophons. gram stain में भी दिखता है वो capsulated yeast and India information जिसमें surrounding is blackened and you can easily appreciate the fungi. There are some special stains are there, especially for histopathology, for detection of the fungal element like PAS and GMS. PAS में fungus red दिखेगी, Cumaris methylum and silver stain में fungi becomes black. Now culture. So fungus को culture कर सकते हैं. Which media we use is Seborrhoeides dextrosaga, which has a acidic pH which is required for fungal. But if you add an antibiotic, cycloheximide, chloramphenicol, it will simultaneously inhibit the growth of the bacteria. So it will be selective for the fungi. Now, what are the temperature and duration? 25 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. And the duration is up to 1 month, because certain fungi, they grow very rapidly within 24 to 48 hours, like Candida. 48 hours zygomyces. Aspergillus, they grow within 72 hours to 4 to 5 days, maximum 4 to 5 days. But certain fungi like dimorphic fungi, they take such a long time. It takes 3 to 4 weeks to grow. So the yeast colonies look like this pasty colony, which can be identified by gram stain, germ tube, Dalmy techniques, as well as by identifying as biotech to compact system, and antifungal susceptibility by the same biotech to compact. However, the mold will be appear like this, a filamentous growth, and for their identification we require different technique. So for the identification mode, we have to do a LPCB, that is Lactophenol Cotton Blue. This is 2-mark question. What are the content of LPCB and their usage? So lactose is for the sugar, phenol for killing of the fungus, and cotton blue is the dye that is used to stain the fungi. Based on the morphology, we can identify this is which type of fungi, its genus as well as species. और अभी जो डिस्कस किया, this is a germ tube. So this is a germ tube person, there is a no constriction, and it is for identification of Candida albicans. If germ tube is negative, these are called as Candida non-albicans species. Then कौन में लगा, that is dalmo preparation.
Urease test can be used, and dimorphism. Dimorphism, you have to grow the fungus in two different temperature. In 25 degree you appreciate mold, and 37 at yeast, and if when you change the temperature it will be changed. So that is called dimorphism test or the yeast conversion. Then the serological test or molecular test for the diagnosis are like a latex agglutination test for Cryptococcus neoformans, and galactomannan antigen test for Aspergillus infection, 1,3-beta-diglycan for systemic fungal infection, and PCR can be used for the rapid identification, as well as there is one more test, that is Candida mannan IgM antibody detection test. It detects the fungal elements before 7 days before the Candidemia results. Then we have antifungal susceptibility and treatment. So there are various antifungals are available like pauline, azoles, echinocandins, lamine, antimetabolites, and others. So we use this for the treatment, and there are different mechanisms of action. The thing you have to remember that amphotericin B is generally useful for the treatment of majority of the fungal, azoles also, but it will not cover your zygomyces, and echinocandin is for Candida and Aspergillus. Hope this will help you to understand the overview of microbiology. So take home message is here. We revise classification is like mold and dimorphism. Dimorphism two forms, one at 25 degrees Celsius, 37 per yeast, 25 per mold. Even mold is septate, aseptate, opportunistic, dimorphic infection, superficial, subcutaneous, systemic, and opportunistic. Laboratory diagnosis, sample collection, which sample, how to take, how to preserve them, how to transport them, sterile container before introduction of antifungals, macroscopic appearance, look for the blackening part, microscopic KOH mount, calcoflow mount, gram stain, special stains, India ink, special stains like PAS and GMS. Then you have to do culture on Severus Dextrosacar. Use identification AST methods by Vitek 2 or LPCB methods. Then serological tests like cryptococcal latex agglutination test, literature assays, biomarkers beta-diglycan, galactomannan, Candida mannan, as well as PCR for the identification of fungus. Thank you so much, and the same you can get a PDF to download from the link available. Stay tuned for more such videos and subscribe to MicroMedEd. Thank you.